ने स्वाभिमान सिखाया था, जिसने हम सबको तूफानों से टकराना सिखाया, देश का था अनमोल दीपक जो बाबा साहेब कहलाया था, बाबा साहेब कहलाया था। आज उनकी बातों को हम दिल से अपनाएंगे। सब मिलकर अम्बेडकर जयंती मनाएंगे, अम्बेडकर जयंती मनाएंगे। A very good morning to one and all present over here. Myself Yashami. And myself Divya. Good morning to all. Get ready to be swept away on a journey of life and legacy of a man whose ideas still resonate in the corridors of justice and equality. Dr. Bhimrao Ambedkar. Get ready to swept away on the journey through the life and legacy of a man whose ideas still resonate in the corridors of justice and equality. Today we are gathered here to celebrate the historical anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, architect of Indian Constitution. The journey of life, Dr. B.R. Ambedkar legacy shines bright. From humble beginnings to towering heights, his struggles for justice took fight. Against discrimination he fought. His vision for equality shines bright. His legacy lives on, inspiring generations with its undying might. Hold on your seats as we embark on a riveting exploration of Dr. B.R. Ambedkar's extraordinary journey, from the shackles of discrimination to the heights of intellectual powers. Prayer serves as a means of establishing and nurturing a deeper connection with divine, allowing individuals to seek guidance in times of need. We are honored to have some of our talented students who will join us on stage and lead us in a moment of spiritual connection and reflection. So I would like to call choir group students to honor us in a prayerful moment. आओ साथ मिलकर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को सम्मान दें, उनके जीवन का संदेश हर किसी तक पहुंचाए। ये समारोह का पावन अवसर हम सबको जोड़ता है। अतिथियों का स्वागत करना हर प्रोग्राम का पार्ट होता है, हर प्रोग्राम का पार्ट होता है। So welcome today's our respected guest. Here comes Yashraj Patil for welcome speech. बदल करने का संकल्प, लेकिन वो अपने आंधी में अचल, एक ऐसे इंसान जिनकी शूरवीरता ने बदला इतिहास का कल। A very warm early morning to all. Myself Yashraj Patil from grade 10A. Today we all are gathered here to celebrate the remarkable life and legacy of one of the greatest revolutionary and social reformer, whose contribution to the humanity and freedom struggle of the country reverberates through the corridors of history. Such a person was Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar. His legacy of justice, equality and empowerment continue to inspire our generation worldwide. Now, I requested our manager sister, Reverend Sister Mary Goyekara, our principal sister, Reverend Sister Dr. Bindu Anthony, our vice principal, Reverend Sister Priti Augustine, our administrator, Reverend Sister D.C. Joseph, to come on the dais for welcoming ceremony. I also extended my warmest welcome wishes to all of us present out here. Dr. Baba Saheb Ambedkar was not only the architect of Indian Constitution, but also a beacon of hope for the millions of people. Born into a society plagued by a caste discrimination, Baba Saheb faced countless obstacles on his path to success. Yet with a sheer determination and unwavering resolve, he transcended these barriers and emerged as a voice for the oppressed and marginalized.
His tireless effort laid the groundwork for the emancipation of millions as we fought tirelessly to eradicate the evils of caste discrimination and inequality. At last, on the behalf of our school, I extended my warmest welcome wishes to all and let us celebrate Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti with a pride and determination. Thank you. Yashani, do you know who is the person filled with mindfulness, morality, wisdom and compassion? Divya, are you talking about Buddha? Yes. So, to offer homage to Buddha, here we have Buddha Vandana as a special prayer. But before that, we should invite our sister in the traditional lamp lighting. So, I will request manager of our school, Reverend Sister Mary Koikara, principal of our school, Reverend Sister Brinda Anthony, vice principal of our school, Reverend Sister Preeti Agustin, administrator of our school, Reverend Sister T.C. Joseph, to please come forward and grace us with your presence in lighting the lamp. Importance of lighting lamps is a traditional way to inaugurate events, symbolizing the dispelling of darkness by light and the inauguration. Noble virtues embodied by Gautam Buddha, virtues that inspire millions across the globe. As we join together in reciting the Buddha Vandana, so let us reflect on the universal principle of non-violence and mindfulness that lie at the core of Lord Buddha's teaching. May this invocation set a tone for our celebration, fostering a sense of unity, peace, and spiritual upliftment for all. So now I would like to call Kasturi and her group for the special prayer. Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Kame Sumichachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Surameraya Majjapamadkhana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Sabapapasagalam Kusalasya Upasampada Sachitta Pariyodapanam Etam Buddhanam Sasanam Sadhu Sadhu Sadhu. The Buddha Vandana holds significant importance for students as it offers valuable lessons and principles that can guide them in their academic and personal lives. Cultivation of wisdom. The Buddha Vandana emphasizes the importance of wisdom.
which is essential for students to acquire knowledge, make informed decisions, and navigate through life's challenges effectively. This is just one quality, and there are many such qualities like practice of mindfulness, promotion of compassion, pursuit of inner peace, and ethical development. Overall, the Buddha Vandana serves as a source of inspiration and guidance for students, offering timeless wisdom that can enrich their academic journey and personal growth. Thank you. Drama, where actors ground themselves to portray characters with depth and authenticity. उदाहरण बनकर आएंगे हमारे कलाकार, मंच पर लेकर आएंगे रंग और संस्कार। ड्रामा की दुनिया में अब हम सब खो जाएंगे, आओ साथ मिलकर करें एक नई कहानी का आगाज। So, as we delve into the world of drama, let's explore the power of drama in bringing characters to life and captivating audience. ड्रामा तो हम सब देखेंगे ही, पर उससे पहले दो शब्द शिक्षा, समानता, त्याग और सहकार्य, प्रतिशोध, ये ऐसे शब्द हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये शब्द हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अंबेडकर जी के जीवन से भी ये कुछ इसी तरह जुड़े हुए हैं। शिक्षा, समानता, त्याग और सार्वजनिक सेवा अंबेडकर के जीवन में केवल अचल नीतियां नहीं थी, बल्कि उनके अस्तित्व को परिभाषित करने वाले सिद्धांत थे। इसी के आधार पर हम नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस ड्रामा के द्वारा हम सिर्फ अंबेडकर के संघर्ष जीवन को प्रदर्शित नहीं करना चाहते, बल्कि यह उन युवाओं और छात्रों को प्रेरित करने के लिए है। इसमें अंबेडकर जी के विचारों, संघर्षों और सफलताओं का प्रस्तुतिकरण है, जो हमें संघर्ष के दिनों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके माध्यम से हम युवाओं को सशक्त बनाने का संदेश देते हैं, ताकि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहें और हमारे राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। चलो दोस्तों, एक सफर पर निकलते हैं जो हमें उस वीर की कहानी सुनाएगा। आइए साथ में उन अद्भुत किस्सों की खोज करें जो हमें प्रेरित करेंगे। हाँ, यह ड्रामा भी है भारत के नायक B.R. अम्बेडकर जी के जीवन की एक अद्वितीय कहानी, जो हमें सदैव प्रेरित करेगी। मैं कहूँ और आप सुनो, उससे अच्छा आप स्वयं ही देख लेना। So, get ready to swept away on an exhilarating journey where you will delve into the trials and triumphs of one of the history's most inspiring figures, where every moment is infused with passion, hope, and the power to transform. Prepare yourself to be transported to an era of resilience, courage, and unyielding determination. So, let's start the play. Good morning, sir. Good morning, everyone. Sit down. Now we will take the attendance. Ramesh, Present, sir. Damodar, Present, sir. Gangadhar, Present, sir. Sahibrao, Present, sir. Bhimrao. Sir, Yes, he is cleaning corridors and toilet. fine. Let him in. Now let's continue. Tell me, when did first World War started? 1904. Wrong. 1918. Wrong. Sir, may I tell? No. Why do you even care? Do your own. But sir, I know the answer. Fine. Tell me your answer. Sir, 1914. You are right. Sir, may I sit with them and study? Yes, you can. Sir, he can't sit with us. He belongs to lower caste. Yes, he is. But you need to understand that he also wants to study. Bhimrao, sit down on the floor. Bhimrao, you can't sit with us. You are from lower caste. Go away, go away. I have finished my food. Let me have some water. Look, that lower class boy is drinking water from our pot. Hey, stop. You can't drink water from this pot. You are from lower caste. But I am thirsty. I also want to drink water. What should we do next? Wait, I will pour some water on your hand. आज के छात्रों के पास अनेक सुविधाएं हैं, लेकिन वे अक्सर उनका सही से उपयोग नहीं करते हैं, उसका सही से लाभ नहीं उठाते। इसके विपरीत
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अनेक संघर्षों का सामना करते हुए और शैक्षिक सुविधाएं न होकर भी अपने शैक्षिक पहलुओं में अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। इस उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए और यह जानना चाहिए कि संकल्पित होकर और मेहनत करके हम किसी भी स्थिति में महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। As we gather here to celebrate the birth anniversary of the great social reformer, Dr. B.R. Ambedkar, We have a student of our class who will be delivering her speech on the great contributions of Dr. Baba Saheb Ambedkar to our society. Yes. I would like to call Vedanti Patil for her speech. Good morning everyone. भारत रत्न, बोधिसत्व, कैवारी, शिल्पकार, महामानव, विश्व रत्न, कायदे पंडित, घटनाकार, ज्ञान सूर्य, अर्थशास्त्री डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आज यांची जयंती. Myself Vedanti Pramod Patil from class 10th A to deliver a speech. Not boring but informative. Okay, let's move on. As you know, Dr. Babasaheb Ambedkar was a great Indian jurist, economist and a social reformer who dedicated his life to uplift the minority sections of society. बाबा साहेब का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था. श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागरा. श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुना, मेरी यह सृष्टि 4 वर्णों में बटी है और इस बंटवारे का आधार गुण और कर्म है, जन्म नहीं. जन्म से छोटा या बड़ा होना पश्चिम की परंपरा है, पूरब में ऐसा नहीं होता. हम तो मानते आए हैं कि साधु जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल ढेरो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान. यह दोहा लिखने वाले कौन थे? एक दलित जुलाहा, जिनको हमने संत कबीर कहा. संत रैदास कौन थे? दलित. संत नामदेव दलित. पीछे लौटेंगे तो रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि, वह भी तो एक दलित थे. उस समय वर्ण व्यवस्था आज जैसी नहीं थी. बाबा साहेब की उन्नति और अविश्वसनीय लगती है, पर यह सब सच है. यह मानना कठिन होगा कि अपने आत्मबल और प्रतिभा से कोई अपने भाग्य की रेखाएं इस तरह बदल सकता है. अरे पर्वत तू कल तक जिसकी लाचारी पर हंसता था, तेरी चोटी पर बैठा है वही वैसा किया लेकर. चलिए हम बाबा साहेब को आज याद करके उनसे कुछ सीखे. पहले ये जान लो कि न चोर हार्य न राज हार्य, न भ्रांत भाज्य न च भारकारी, वैगति वर्धति एव नित्या, विद्याधन सर्वधन प्रधानकम. अर्थात विद्या एक ऐसा धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, न राजा हार सकता है, इसका बंटवारा नहीं हो सकता. खर्च करने से यह धन और बढ़ता है, समय के साथ उसकी उपयोगिता भी बढ़ती है. इसीलिए संसार में विद्या जैसा धन एक ही है. यह जरा सी बात जो भी समझ जाए, उसके लिए अंबेडकर, विवेकानंद, सावित्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है. क्या था बाबा साहेब के पास? सचमुच कुछ नहीं. जितना आपके पास है उससे सैकड़ों गुना कम. लेकिन विद्या ग्रहण करने की जो प्यास इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने, यानी एक निर्धन दलित बच्चे ने आगर जाके महान राष्ट्र का संविधान निर्माता बन गया. वाल्मीकि कहते हैं, न भीतो मरदस्मी केवल दुष्टम यश, अर्थात मुझे मृत्यु का भय नहीं है, केवल अपयश का भय है. बाबा साहेब जानते थे धन और दौलत और माया का स्थान कर्तव्य के आगे शून्य है. लालच के लकीर में उन्होंने अपने उज्जवल कीर्ति को खराब नहीं होने दिया. विजय आतंक घड़ी भर की धमक है, विजय आतंक घड़ी भर की धमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है. भुवन की जीत गिरती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पत्थरों में. शरण केवल उजागर धर्म होगा, अंत में सत्कर्म होगा. उनके लाइब्रेरी में 50,000 से अधिकतम बुक थे. बाबा साहेब के बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने पढ़ कर अपना भाग्य लिखा. धन्यवाद. लाखो घरांचा उद्धार झाला. दीनदुबळ्यांना जगण्याचा अधिकार मिळाला. कोटी कोटी अभिवादन त्या महामानवाला. परंपरा
if the women deserved as much as the men. They didn't get the desired respect. We can see in the scene an Indian woman waking up early in the morning. She started a household work. Working for her family, looking after her children, and filling their lives of struggle. Women going to work. She works in a factory in a hazardous situation. In this scene, you can see two men playing cards and not doing work. She works hard for fulfilling family needs. But at the time of the salary or the month ending, she receives less salary than the men. This scene is counterpart of the last. Everything has limit, and if the limit is more stress, his mental health gets affected. At home, he scolds his family members on minor issues. अंबेडकर ने उद्योग सेक्टर में महिलाओं और पुरुषों के लिए समानता को बढ़ावा दिया। उन्होंने वर्किंग आवर्स कम करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमने इस सीन में देखा कि ज्यादा वर्किंग आवर्स के कारण उस इंसान की मानसिक व शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने समाज को यह बताया कि समान वेतन, समान काम के लिए समान भुगतान और समान अधिकार न केवल नैतिकता है, बल्कि ये एक स्वतंत्र और समृद्ध समाज की नींव है। आजकल यह संदेश और उनकी दृढ़ नीतियों की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी महिलाओं और पुरुषों के साथ समान अधिकार और अवसर नहीं मिल पा रहे। इस सीन से हमारा उद्देश्य यही है कि हमें इस विचारधारा को समझना और उसे अमल में लाना चाहिए। Now we have an activity quiz. We are honored to have a quiz that will put your knowledge to test. So without any further delay, let's welcome our brains behind this quiz. So I would like to call Divya and Shravani. I would like to hand over the mic to them for hosting the quiz. A very prosperous and energetic morning to all. Continuing our program and tributing our heartfelt gratitude to Dr. B.R. Ambedkar. We all know a very basic information about Dr. Babasaheb Ambedkar's life. But being an active citizen of the country, we are supposed to know his sacrifices in life. So here we have organized a quiz for this. Welcome everyone to an enlightening quiz dedicated to the illustrious life and profound contributions of Dr. Babasaheb Ambedkar. To know more about him, let us take you back to the thrilling and aspiring life of Dr. Babasaheb Ambedkar. So gear up your mind, for this quiz isn't just about facts, it's about celebrating the enduring legacy of a true icon. But before starting the quiz, we will inform you about the rules and regulations of the quiz. First, we will read a passage for you and you are supposed to give the answer. Second, after listening to the passage, we will ask you some questions, and if you know the answer, you can raise your hand and let us know. There will be prize for each correct answer. And the most important thing, the passage won't be repeated again, so listen it carefully. Teachers and sisters can give answer, but if students don't know, let's start the passage. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, known as Dr. Babasaheb Ambedkar, was born on 14th of April 1891 in Mhow, Madhya Pradesh. His father's name was Ramji Maloji Sakhpal, who served in the British Indian Army, and his mother was Bhimabai Sakhpal. Dr. Babasaheb Ambedkar earned multiple degrees, including 2 doctorates from Columbia University in the United States and the London School of Economics in the United Kingdom. Ambedkar married Ramabai in 1906 at the age of 15, as was the custom of the time.
Throughout his life, Ambedkar remained committed to fighting against social discrimination and injustice. He left the world on December 6, 1956, leaving a profound on Indian history. I hope everyone listened the passage carefully. Now it's time for the questions. So the first question is, in which year Dr. Babasaheb Ambedkar was born? Dear Ramabai, I am on my journey on developing the nation. I have to travel whole India in order to achieve a goal of developed nation. During all of this, looking after my family is impossible for me. So, I am leaving this responsibility to you. I ask you to look after our family, children, yourself too. This will be a great help for me and make me fearless during this journey. In this scene, you can see Ramabai sitting in a dark room, sewing a cloth. And every scene depicts the protest against the injustice in the society. Suddenly, she heard a sharp knock on the door. There were women asking for help regarding women's rights as she was the leader of the club. She went out and started protesting for them. Jai Hind! After the protest, as she reached home, she came to know her child was no more. Tears welled up in her eyes as she struggled to find the strength to face the unbearable truth. With a heavy heart, Ramabai whispered a silent prayer for the departed soul. Under the shadow of sky, Ramabai stood beside a freshly dug grave. Her heart heavy with grief, with trembling hands, Ramabai gently lowered her beloved son into the earth. In the absence of Dr. B.R. Ambedkar, she found herself wrestling with weight of sorrows alone. Her spirit weakened, but not broken. B.R. अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई अम्बेडकर उनके जीवन और सफलता में महत्वपूर्ण बलिदान दिया। हमने देखा कि अम्बेडकर जी के घर न होते हुए भी उन्होंने सामाजिक काम और घर अच्छे से संभाला। उनके पुत्र की मृत्यु जब हुई तब अम्बेडकर जी वहां नहीं थे, फिर भी उन्होंने हौसला नहीं खोया। उनके बलिदान को अक्सर अनदेखा किया जाता है, परंतु उनके त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप ही अम्बेडकर निसंकोच होकर काम कर पाते थे। यदि घर रहने वाली हर एक स्त्री त्याग की भावना रखे तो न जाने कितने ही अम्बेडकर का निर्माण हो सकता है। उनका संघर्ष और साहस हमें यह बताता है कि किसी भी परिस्थिति में यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहे तो हम सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। On this occasion of birth anniversary of Dr. Ambedkar, it's my privilege to invite our school vice principal, Reverend Sister Preeti Agasti, to share our insights on this auspicious day. A great man is different from an eminent one, in that he is ready to be the servant of the society, said Ambedkar. A great and happiest morning to all. Respected manager, Reverend Sister Mary Koikram, Reverend Sister Bindu Anthony, our principal, Sister Tissy, our administrator, dear teachers and my dear students. First of all, I wish you a happy Ambedkar Jayanti to all. We all know that Indian history is certainly filled with many patriotic freedom fighters and social reformers. One famous name among them is that
of Bhimrao Ramji Ambedkar. The nationalistic and sacred occasion of Ambedkar Jayanti commemorate the memory and birth of this great personality. Most noteworthy, the aura of this man is such that celebration of Ambedkar Jayanti take place well beyond the borders of India. B.R. Ambedkar was a man of many talents and professions. He was a politician, jurist, economist, and social reformer. Furthermore, Ambedkar was the driving force behind the Dalit Buddhist movement. Moreover, this man was passionate to fight the various injustices prevalent in Indian society at the time. So thank you very much. Hey you, stand up. Get out of the class. Sir, but what I have done? I said get out. I think no one is going to say anything. Santosh, you may come in. Stand here. Each one of you saw what I did, but is it correct? No. Then why didn't you stand for him? जुल्म करने वाले से ज्यादा उसे सहने वाला गुनहगार होता है, और अगर कोई उसे देखकर भी अनदेखा करे तो वो उससे भी बड़ा गुनहगार होता है. If anything wrong is happening in front of your eyes, you have to protest against it. Even if there is no one, you should be the first to raise your voice against injustice. Just like Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar. इससे हमारा उद्देश्य है कि आज के युवाओं को प्रतिशोध करना आना चाहिए. यदि समाज में कोई अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए. न्याय के लिए संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है. इससे हमारा देश एक बेहतर और न्याय संगत भविष्य बना सकता है. देश के कई वीरों ने, जिसमें अंबेडकर भी आते हैं, यदि उन्होंने आवाज न उठाया होता तो हम जिस स्वतंत्रता का आनंद उठाते हैं शायद कभी न उठा पाते. हमें अपनी आवाज को सुनाने का साहस दिखाना चाहिए. इससे हम एक मजबूत देश बना सकते हैं. हमें हमारे अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए. आजकल हम देखते हैं कि लोग लड़ते हैं, परंतु अपने देश के लिए नहीं, बल्कि अपने अपने रंगों के लिए. कोई भगवे के लिए लड़ता है तो कोई सफ़ेद के लिए, कोई नीले के लिए तो कोई हरे के लिए. पर अनजाने में हम यह भूल जाते हैं कि यह सभी रंग हमारे तिरंगे का ही भाग है. हमारे संविधान उद्देशिका बंधुत्व, समानता और न्याय के बारे में बताती है. इन मूल्यों में से मुख्य है बंधुत्व, यानी राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना और देश की अखंडता और एकपन को बढ़ावा देना. इसलिए हमें अलग अलग रंगों के लिए लड़ने से अच्छा सभी को एकत्रित होना होगा और फिर तिरंगे के लिए लड़ना होगा. तो फिर चलिए हम सब मिलकर अपने देश को मजबूत और प्रगतिशील बनाएं. As Dr. Baba Saheb Ambedkar has also said, we are Indians, firstly and lastly. Welcome to our exploration of anchoring in dance. Get ready to witness the magic of dance. As our performers take the stage, they are not just dancing, They are anchoring themselves to the rhythm, to the music, and to the emotions that drive their every move. Let the energy flow through you. Let the performance begin. One
As we draw near to the conclusion of today's program, we have one final event left that holds a great significance. That's right. So I would like to call Sarika for a vote of thanks. So let us call Sarika as she is going to sharing her heartful appreciation towards us. नमन त्या पराक्रमाला, नमन त्या देशप्रेमाला, नमन त्या ज्ञान देवतेला, नमन अशा आपल्या बाबासाहेबांना. Dr. B.R. Ambedkar's thought on discrimination and untouchability were rooted in his commitment of social justice and equality towards society. His life is dedicated to society for the challenges. This auspicious occasion of Dr. B.R. Ambedkar's, here I, Sarika Patil, standing before you with my heartfelt gratitude. First and foremost, I thank to everyone who present here. And second, I would like to thank our sister Dr. Reverend Sister Bindu Anthony for her trust on us for giving this platform to celebrate this. Once again, I would like to thank you everyone and Poonam teacher for her efforts behind the stage. She ensured that everything ran smoothly and the students of class 10th, thank you to everyone. शौर्य असावे ते शुभासारखे, शिक्षण असावे ते भीमासारखे आणि जीवन जगावे सिंहासारखे. इथं मी माझे शब्द संपवते. थँक्यू.